Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. To all, I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Okay. So we'll see the remaining part from drawing chapter. Yesterday, what we have seen? Yesterday we have seen the heat transfer mechanisms. That is a conduction, convection, and radiation. Remember, solid to solid conduction and liquid to liquid or liquid to fluid, that is a convection, and radiation is also there. So radiation from in the form of electromagnetic waves. So transfer of heat energy, right? We have seen about this. After that, we have seen the different conductivities of different metals. We have seen thermal conductivities of some metals. We have seen what do you mean by drying. We have seen what do you mean by evaporation. So basically, drying means removal of solvent or removal of water. Removal of water in a small amount. Removal of solvent in a small amount, and in the drying you are going to get a solid product. Now, as compared to evaporation, in the evaporation, what happens? So you are evaporating, you are removing the large amount of solvent, and you are getting a concentrated slurry at the end. Okay? So evaporation में slurry मिलता है, drying में आपको dry product मिलता है, right? So that is the difference. That is the difference, right? So after that, we have seen what are the importance of drying. Okay, after that, we have seen basic definitions. What do you mean by bound water? What do you mean by unbound water? What do you mean by equilibrium moisture content? What do you mean by dew point? Psychometric charge क्या होता है? So details of psychometric charge we will see in a different chapter, that is known as a humidification, dehumidification, and okay. So we have seen what do you mean by what do you mean by sorption, what do you mean by desorption. We have seen what do you mean by sorption, what do you mean by desorption. After that, we have seen these definitions, LOD, etc, etc. LOD क्या definition हो चुके हैं आपके. This was our last slide yesterday. So we have seen LOD, loss on drying. After that, okay, today we'll start from this slide. Now suppose that you have a wet material. आपके पास में क्या है, थोड़ा बहुत wet material है in a petri dish, और आपको उसको dry करना है. So right, so you have some wet material, you want to dry it, you are subjecting a drying process. Now what happens at a molecular level during the drying? So what happens at the molecular level during the drying? So that we'll try to understand. So if you plot a drying rate versus decrease in the moisture content, you are going to get, this is curve is known as a drying curve. इसको अपन बोलते हैं ड्राइंग कर्व, और ये FMC कर्व, फ्री मॉइस्चर कंटेंट कर्व, और ड्राइंग कर्व, सिंपली ड्राइंग कर्व और फ्री मॉइस्चर कंटेंट कर्व, ड्राइंग कर्व और फ्री मॉइस्चर कंटेंट कर्व. नाउ ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस व्हाट हैपेंस? So है ना, so drying will not start immediately when you place some material in a oven. आपने अगर कोई वेट मटेरियल पेट्री प्लेट में अपन रख दिया ओवन में, तो इमीडिएटली ड्राइंग स्टार्ट नहीं होता है. सो एट अ मोलिकुलर लेवल तो कैसे स्टार्ट होता है, देखो. तो व्हेन यू सब्जेक्ट ए मटेरियल टू ए ड्राइंग, सो इनिशियल पीरियड, द पीरियड रिप्रेजेंटेड बाय AB, the period represented by AB, that is known as the initial adjustment period. This is known as the initial adjustment period. Now during this क्या होता है कि material get heated, है ना. जैसे आप material रखा है drying के लिए, तो material will get heat.
and the temperature of material will increase. Okay? So this is known as a initial adjustment period, and this one is a initial adjustment period. मतलब क्या, initially the material will take a temperature, material will get heated and it will start evaporating the liquid. Now evaporating liquid, so मतलब now the temperature of heating medium and material is same. That point is known as a point B, constant point. Okay? It is known as a constant rate point. Now the curve known as the B and C. ये जो B and C curve है, the time represented by B and C point. तो A B मतलब क्या, initial adjustment period, and the time B C represent a constant rate period. A constant rate period. Constant rate period मतलब क्या? So constant rate period मतलब क्या? So you know that material is already heated at point B. Now it will start evaporating the material. जितना हीट उसको वो मटेरियल को मिल रहा है उतना हीट लॉस हो रहा है. कहाँ पे? इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन. तो हियर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब है ना, द वाटर डिफ्यूज्ड फ्रॉम, है ना, इनसाइड मटेरियल टू द सरफेस ऑफ मटेरियल. वाटर ऐसा नहीं कि एक फ्लश में थोड़ी जाता है. तो वाटर है ना, इन द मॉलिक्यूल वाटर is coming from inside to the surface of material, and from surface it is being evaporated. ठीक है, तो मटेरियल के अंदर का जो वाटर है वो मटेरियल के सरफेस के ऊपर आता है, तो वहां पे सरफेस से फिर इवापोरेट हो जाता है. नाउ एट अ कांस्टेंट रेट पीरियड मीन्स व्हाट, द टाइम BC represent the constant rate period. That means so the amount of heat supplied and the amount of heat evaporated, that is equal, known as the rate of diffusion from inside, in rate of diffusion of water molecule or moisture from inside material, and rate of evaporation of material from the surface of material is same, so known as a constant rate period. And at the point C, at the end of constant rate period के end में क्या होगा, constant rate period के end में क्या होगा? Now at the point C, it is known as a critical moisture content. It is known as a critical moisture content. Now it is a minimum moisture required for the material. It is known as a critical moisture content at the point C. So drying rate is almost constant in this period B and C, but at a point C, drying rate starts decreasing. This is known as a critical moisture content. Now the time CD. So CD curve or CD time represents first falling period. First falling period मतलब क्या है? तो यहाँ पे rate of evaporation decrease होगा. क्यों होगा rate of evaporation decrease? तो C to D. This is known as the first falling period. First falling period क्यों? Because during this period, constant rate period. So constant rate period में क्या है कि the amount of water diffusing from the inside of material to the surface and removal of water from surface via evaporation was equal. So there was a rate of diffusion is equal to rate of evaporation was there, but at a point C, the rate of evaporation start decreasing because in this first falling period rate, no more water, the rate of evaporation, to meet the rate of evaporation, so the amount of water diffusing from the inside of material is decreasing. तो अंदर से जो डिफ्यूज हो रहा है वाटर वो कम हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है. दैट्स व्हाई, है ना, तो यस दैट्स व्हाई, सो द डिफ्यूजन डज नॉट मीटिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन. सो दैट्स व्हाई द रेट ऑफ evaporation or rate of drying will decrease. So that is known as the first falling period. Okay. Now the point representing D and E. तो ये जो D and E point है, so the point D is known as the second critical point. Point D is known as the second critical point, and the time represented by D and E, it is known as a second falling period. It is known as second falling period. So again यहाँ पे क्या है, तो due to supply of temperature and there is no
water inside the material, but at a surface there is a small. So what happens? So there is a development of dry spot on the surface of material. There is development of dry spot on the surface of material, and you know that there is no inside moisture, so no moisture to replace or to diffuse. So diffusion rate is zero, the evaporation rate is very high. That's why the rate of drying is again still decreasing drastically. At the point E is known as the equilibrium moisture content. Point E is known as the equilibrium moisture content. Now at this point or above, okay, above this point you cannot do you cannot do drying. मतलब क्या कि बाबा इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड क्या होता है? सो अगर आपने मटेरियल ड्राई करने के लिए रखा है तो एट अ मॉलिकुलर लेवल क्या क्या चेंज होंगे? पहले क्या चेंज होगा? तो जैसे मटेरियल आप रखेंगे ड्राइंग के लिए तो पॉइंट ए बी, दैट इज नोन एज इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड. तो मटेरियल हीट होगा और वो हीट इनर में मतलब मटेरियल हीट होगा तो टेम्परेचर लेगा, तो इट विल टेक अ टाइम. इमीडिएटली वाटर रिमूव नहीं होगा, it will take a time known as initial adjustment period. Now at a point B you can see point B क्या है? is a constant rate point, right? Constant rate. So at the point B material is adequately heated and start evaporating the water. Now the time represented by the BC curve. BC point क्या है? BC point में तो constant rate period. Now in this period the material from the surface of water that is evaporated at a particular rate, but water present inside the bulk of material that is being replaced. है ना? जो सरफेस के ऊपर वाटर इवेपोरेट हो रहा है वो बल्क ऑफ जो मटेरियल है उससे रिप्लेस हो रहा है वाया डिफ्यूजन. सो हियर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ evaporation of water from surface. That's why known as a constant rate period. Now at the point C एक कुछ टाइम के लिए constant rate period रहता है. At the end of constant rate period the point C represents the critical moisture content. Critical moisture content. Now what do you mean by critical moisture content? You know that very well, we have seen the definition. Critical moisture content. So at the critical moisture content now the diffusing moisture from the bulk of material is decreased. यहाँ पे bulk of material में moisture नहीं है, surface के ऊपर your rate of evaporation ज़्यादा है, but now the rate of diffusion is decreased. So that's why the curve represented by C and D known as the first falling period. So here no more moisture is here, whatever diffusion is there, so it is not adequate to meet the drying evaporating rate. मतलब evaporating rate यहाँ पे evaporation rate from the surface of material, the moisture है ना, जो surface के ऊपर moisture है, तो the rate of evaporation of moisture from the surface of material is high and the rate of diffusion is very less. So that's why there is a decrease in the drying rate. Drying rate decrease हो रहा है. That's why it is known as the first falling period. Now second, the point D point represent the second critical point. Second critical point. यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट जो कोर ऑफ मटेरियल है उसमें का मॉइस्चर डिफ्यूज हो चुका है पूरा एंड अभी मटेरियल में मॉइस्चर नहीं है, सरफेस के ऊपर थोड़ा बहुत है. नाउ डी क्रिटिकल पॉइंट, डी इज अ सेकंड क्रिटिकल पॉइंट. नाउ द कर्व रिप्रेजेंट बाय डी एंड सी, ये जो कर्व है इज नोन एज द सेकंड फॉलिंग पीरियड. सेकंड फॉलिंग पीरियड क्यों है? बिकॉज देयर इज नो मोर moisture which is being diffused from bulk of material to the surface. surface के ऊपर भी जो moisture है वो evaporate हो चुका है. So here dry spot occurs on the material. Dry spots start appearing on the material. Right now the point E is known as a equilibrium moisture content. Equilibrium moisture content क्या होता है? The water held by material which exerts a vapor pressure as equal to that of the atmospheric pressure. We'll see it again. यहाँ पे देखो same thing. Just a minute. You can see over here. So drying curve.
इफ यू प्लॉट ए टाइम वर्सेस ड्राइंग रेट मतलब क्या है ना, ड्राइंग रेट मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच इज बीइंग रिमूव्ड पर यूनिट टाइम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज अ ड्राइंग रेट. ड्राइंग रेट मतलब क्या है, तो amount of moisture or water removed from the material or amount of solvent removed from the material at a given temperature in a unit time, known as drying rate, है ना. ड्राइंग कर्व क्या है, when you plot a temperature decrease in the temperature versus decrease in the moisture versus drying rate, so you will get a drying curve or free moisture content curve. Now in this in this you have different you are getting different curves. So first is nothing but the time corresponding to AB. अपन ने देखा है time corresponding to AB. AB मतलब क्या, initial adjustment period. It is known as the initial adjustment period. So material will absorb the heat, temperature of material will increase, and moisture will begin to evaporate. And ये जो evaporation हो रहा है, that will tend to cool the drying material. It will tend to cool the drying solid. After some time, temperature stabilizes due to heating and cooling rate becomes equal. Heating and cooling rate यहाँ पे equal बनता है, and this temperature is known as a wet bulb temperature. This is known as a wet bulb temperature. So point B on the graph, point B जो है यहाँ पे, point B you can say it is known as a wet bulb temperature. Wet bulb temperature. Initial adjustment period, right? Initial adjustment period, wet bulb temperature, and that is denoted by point B. Wet bulb temperature of drying air, wet bulb temperature of drying air. देखो ड्राइंग कर्व में पहला जो पार्ट है आपका ए बी, वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, दैट रिप्रेजेंट द इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड. तो मटेरियल व्हेन यू सब्जेक्ट फॉर ड्राइंग, मटेरियल विल गेट हीटेड and solid will absorb heat, temperature of the solid will increase, and moisture will start to evaporate. Now whatever evaporation is in यहाँ पे जो evaporation हो रहा है, so because of that evaporation, so it will tend to cool the drying solid. But after some time temperature जब stabilize हुआ, after some time temperature stabilizes, and temperature stabilizes because of the heating and cooling is equal, right? Now this temperature is known as a wet bulb temperature, which is a point B in the graph, right? Now after B there is a constant rate period. यहाँ पे stabilize होगा, heating and cooling is equal to, heating and cooling they are equal. So at point B, heating and cooling is equal to at point B. That's why constant process होगा यहाँ पे. तो second curve जो है आपका, that is known as the time BC. So the time B and C represent the constant rate period. कांस्टेंट रेट पे यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रेट पे मतलब क्या, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड ड्राइंग रेट इज आल्सो कांस्टेंट. मॉइस्चर इवापोरेटेड फ्रॉम द surface of the material is replaced by water diffusing from the interior of the solid or bulk of solid. Rate of diffusion is equal to rate of evaporation. Rate of diffusion is equal to rate of evaporation. And यहाँ पे moisture content at the end of this constant rate period, the moisture content at the end of this constant rate period is known as a critical moisture content. Now इसके बाद में क्या होगा, first falling period. Now the time representing CD, the time corresponding to C and D points of the drying curve, it is known as the first falling rate period. Now during इसमें क्या होता है, during this surface water is no longer replaced by surface water is no longer replaced at a rate fast enough to maintain the continuous film. मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम तो नहीं बना सकता, मान लीजिए यहाँ पे हीटिंग चल रहा है, इसमें मटेरियल है आपको, मटेरियल है, तो यहाँ पे भी मॉइस्चर है मटेरियल में, ये तो हो गया आपका सरफेस. सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द हीटिंग, so moisture from this bulk of solid comes to the surface and it will form a surface film, and from that film water is evaporated.
Now, when the rate of diffusion and rate of evaporation of liquid from the surface of the material, when the rate of diffusion of moisture from the interior of the material and rate of evaporation of liquid from the film from the surface of liquid surface of solid, evaporation rate and diffusion rate becomes equal, that is known as constant rate period. ठीक है, और फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड में क्या होता है कि द डिफ्यूजन रेट इज डिक्रीज्ड या एज कंपेयर टू evaporation rate in the simple language, right? So surface water is no longer replaced at a same rate to maintain the continuous film on surface. So that's why dry spot appears and drying rate जो है it start decreasing, drying rate start falling or decreasing. The point D, जो point D था, it is known as the second critical point at which film of the surface water is completely evaporated. Surface का water जो film जो बना है, it is completely evaporated at the D, that is known as second critical point. Second critical point. Now third क्या है? Time corresponding to उसके बाद में time corresponding to DNC. Time corresponding to DNC. Known as second falling rate period. Second falling rate period. During this, the rate of drying even fall more rapidly. इसमें जो second critical period है उसमें ड्राइंग रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है, मतलब ड्राइंग रेट बहुत, वहाँ पे ड्राइंग बहुत ही स्लोली हुआ. ड्राइंग फास्ट कहाँ पे होगा? तो जो कांस्टेंट रेट ड्राइंग है, कांस्टेंट रेट प्रोसेस है, वहाँ पे ड्राइंग सबसे ज़्यादा हुआ. ठीक है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर का और मॉइस्चर का रिमूवल हुआ. एट अ फर्स्ट फॉलिंग पीरियड थोड़ा सा कम होगा एंड सेकंड फॉलिंग पीरियड में बहुत ही ज़्यादा रेट कम होगा. ड्राइंग रेट विल डिक्रीज, विच इज नोन एज अ फर्स्ट. So drying rate will fall even more rapidly than a first falling period. So rate of drying is dependent on the rate of diffusion of the vapor, the moisture to the surface. Point E is referred as the equilibrium moisture content. Point E जो है उसको अपन equilibrium moisture content बोलते हैं. Point E is nothing but equilibrium moisture content. Falling. That occurs and beyond the point E के बाद में, if you try to remove the moisture beyond the point E, beyond the point E the drying rate is 0. Beyond the point E के बाद में drying rate क्या है? 0 है, right? And drying beyond the point E is a waste of time and energy. देखो यहाँ पे है ना, this is known as a drying curve. So if you plot a moisture versus a drying rate, decrease in the moisture versus a drying rate, so you will get a drying curve, or also known as a free moisture content curve. Now if you subject a material for drying, initially material will take a time to adjust, that is represented by A and B. The time represented by A and B, that is known as the initial adjustment time, because in this material will take a temperature, material will take a heat, material will get heated and it will start evaporating the water, right? It will start evaporating the water now, and at the point B, so temperature will stabilize, and at the point B the rate of heating and rate of cooling will become equal. Now it will become a constant. B is known as a wet bulb temperature of the air. Wet bulb temperature of the air. So wet bulb temperature बोलते हैं. Now B and C, the time represented by B and C known as a constant rate period. Known as a constant rate period. में क्या हो रहा है? So the rate of drying, there is a rate of, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? So moisture that is coming from bulk of material by diffusion to the surface, and then from surface it is being removed. So rate of diffusion is equal to the rate of evaporation. Rate of diffusion of moisture from the bulk of solid and rate of evaporation of moisture from the surface of solid has become equal. So that's why it is known as a constant rate period. Now at the end of this constant rate period, so
rate of diffusion will decrease slowly. Rate of diffusion will decrease slowly, and the point C is represented by critical moisture content. Now, the time curve C and D. The time curve C and D represent first falling period. First falling period मतलब क्या, यहाँ पे the rate of diffusion is less than rate of evaporation of moisture from the surface. So rate of diffusion of moisture from the interior of the solid is less than the rate of evaporation of moisture from the surface. तो यहाँ पे the diffusion is not able to meet the required amount of here required amount of moisture is not replaced on a surface by diffusion, and that's why rate of drying will decrease, known as the first falling period. And at the point D, on the surface, the hot spot will start appearing. That is known as second critical point. Rate of drying is decreased. Okay. Now at a point D and E, the time curve D and E, so known as the second falling period, and in this again there is a decrease in the drying rate. Okay, as compared to first falling period. Second falling period में drying rate और भी ज़्यादा कम हो रहा है as compared to first falling period. That point E represent the equilibrium moisture content. ये सब क्यों पढ़ना है? Because above point E you cannot remove the moisture. आपने यहाँ से कितना भी हीट किया, इसके आगे moisture remove नहीं होता है. And that's why. So during the drying, so you have to subject the material drying above its critical moisture content. Critical moisture content के नीचे मतलब अगर गया critical moisture content आ गया उसका, बाद में भी हीटिंग चालू है तो कोई यूजफुल नहीं, इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. सो हीटिंग और ड्राइंग अबाउ द पॉइंट ई is a waste of time and money, right? So that why I have seen in this slide. Now very important part, very important part. So what do you mean by hygroscopic material? What do you mean by hygroscopic material? Important है, क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत बार आ चुका है. What do you mean by hygroscopic material? ना आपने ये सुना होगा, the material which absorb the moisture from the environment, known as a hygroscopic material. Material or substance that can absorb moisture from environment, but the material will absorb the moisture from environment and there is an increase in the weight. Hygroscopic material मतलब क्या, कि आपके पास मान लीजिए 1 ग्राम शुगर है, 1 ग्राम शुगर आपने ऐसे रख दिया बारिश के दिनों में. तो बारिश के दिनों में क्या होता है, इन द बारिश है ना, तो बारिश के दिनों में क्या होता है कि मॉइस्चर ज़्यादा होता है एनवायरमेंट, तो शुगर क्या करेगा, मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेगा. तो 1 ग्राम है ना, तो उसको बाद में वेट किया था, वेट करेंगे आप तो 1.1 ग्राम निकलेगा, मतलब 100 mg उसने मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लिया, राइट. तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल मीन्स व्हाट, द मटेरियल और सब्सटेंस दैट कैन एब्सॉर्ब ए मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरमेंट. देयर इज इंक्रीज इन द वेट ऑफ दैट मटेरियल, बट दैट मटेरियल विल नॉट लिक्विफाई और दैट मटेरियल विल नॉट गेट लिक्विफाइड. तो ऐसा नहीं कि उसमें पूरा पानी हो जाएगा, ऐसा नहीं. तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल मीन्स मटेरियल और सब्सटेंस दैट कैन एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरमेंट. देयर इज इंक्रीज इन द वेट ऑफ मटेरियल बट इट विल नॉट dissolve or it will not liquefy. For example, hygroscopic material का एग्जाम्पल याद रखना है, शुगर आयोडीन, शुगर है आयोडीन है, राइट. नाउ डेलिक्वेशन मटेरियल, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. डेलिक्वेशन मतलब सभी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. डेलिक्वेशन मटेरियल मीन्स व्हाट, द सब्सटेंस और मटेरियल विच इज आल्सो एबल टू एब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरमेंट बट एट अ ग्रेटर एक्सटेंट. तो यहाँ पे डेलिक्वेशन मटेरियल क्या है, वो भी मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है लेकिन ज़्यादा करता है, ठीक है. So substance or material that can absorb a moisture from environment up to a extent that it get liquefied. तो मतलब हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या है, मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है, वेट उसका पड़ता है बट लिक्विड नहीं बनेगा, वो सॉलिड रहेगा. बट डेलिक्वेशन मटेरियल मतलब क्या है, इस तरीके से मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा, इतना मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा पूरा लिक्विड बन जाएगा. डेलिक्वेशन मटेरियल और सब्सटेंस दैट कैन एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरमेंट अप टू द एक्सटेंट दैट इट विल गेट लिक्विफाइड, है ना. So in this conversion of solid to liquid takes place. यहाँ पे आपका ओरिजिनल मटेरियल सॉलिड था, उसने मॉइस्चर एब्सॉर्ब करके इतना कर लिया अभी वो लिक्विड बन गया, है ना. नाउ एग्जांपल ऑफ दिस डेलिक्वेसेंट मटेरियल याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. आपने देखो कॉलेज में आपने देखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एक
उसके छोटे छोटे ये आते है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक राउंड शेप के एक उसके क्रिस्टल्स आते हैं आपके लेबोरेटरी यूज के लिए, यू माइट हैव सीन। तो कभी कभी क्या होता है वो एक में के साथ चिपक जाते हैं, और एक आधा पीस अगर बाय चांस बेंच के ऊपर गिर गया आपके, है ना, मतलब वर्किंग फ्लोर के ऊपर गिर गया, तो कुछ टाइम के बाद में उसको पानी लग जाता है ना। दैट मीन्स इट इज अ डेलिक्वेसेंट and it will absorb moisture from environment and it will become liquid. Sodium hydroxide is a deliquescent. Calcium hydroxide is a deliquescent. And copper hydroxide, zinc, okay? No. Sodium hydroxide, calcium hydroxide, copper hydroxide, zinc chloride, you know. Then sodium valproate. देखो ड्रग का नाम आ गया सोडियम वेलप्रेट. सोडियम वेलप्रेट इज हाईली डेलिक्वेसेंट ड्रग. सोडियम वेलप्रेट इज हाईली डेलिक्वेसेंट ड्रग. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. तो सोडियम वेलप्रेट इज अ drug used in the epilepsy, we have already seen. So that is a deliquescent drug. So ion exchange regime can prevent this problem. मतलब जो डेलिक्वेसेंट ड्रग है उसमें आयन एक्सचेंज रेजिन डालना पड़ता है ताकि वो लिक्विड ना बने. नाउ थर्ड कैटेगरी इज देयर. सो इफ्लोरेसेंट मटेरियल, इफ्लोरेसेंट मटेरियल ये यहाँ पे इफ्लोरेसेंट मटेरियल. तो व्हाट डू मीन बाय इफ्लोरेसेंट मटेरियल? So this was question in GPAT 23 also, है ना. GPAT 23 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन. तो मटेरियल, okay, so when material is subjected to a humid condition, ना, when material is subject to a humid condition, so it will release the water of crystallization. It will release the water of crystallization wholly or by partly upon exposure to humid environment, and it will get liquefied. So example is caffeine citrate, है ना, caffeine, then ferric citric acid, ferrous sulfate, sodium carbonate. Sodium carbonate is known as a washing soda. देखो है ना. सो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल मतलब क्या, और एक बार बोलता हूँ, दैट विल एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम व्हाट एनवायरनमेंट, है ना. अगर आपको इफ यू सब्जेक्ट ए मटेरियल टू ए ह्यूमिड कंडीशन, मीन्स ह्यूमिड मतलब क्या, when there is a high moisture content in the air. If you subject a material to a humid condition, material will absorb the moisture and there is an increase in the weight of that material, but there is no liquefaction, known as a hygroscopic material. Deliquescent material मतलब क्या है, that will absorb moisture from environment and that will become a liquid, है ना. एग्जाम्पल याद रखना है. हाइग्रोस्कोपिक का एग्जाम्पल है सोडियम, शुगर एंड आयोडीन, एंड डेलिक्वेसेंट का एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, सोडियम वेलप्रेट, है ना. इफ्लोरेसेंट मटेरियल मतलब क्या है, दैट विल रिलीज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये दोनों वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, ये वाला क्या करता है, थोड़ा रिलीज करता है. इट विल रिलीज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन इट इज एक्सपोज टू ह्यूमिड कंडीशन, है ना. एग्जाम्पल याद रखना है, कैफीन, देन साइट्रिक एसिड, देन फेरस सल्फेट, देन सोडियम कार्बोनेट, आल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ये GPAT 23 में आ चुका है. हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्वेशन तो बहुत बार आ चुके हैं, फार्मासिस्ट एग्जाम, बाकी एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं. इफ्लोरेसेंट मतलब क्या, दैट विल रिलीज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज कर देगा. मतलब डेलिक्वेसेंट और लिफ्लोरेसेंट मटेरियल आप कंपेयर में कर सकते हो. डेलिक्वेसेंट मटेरियल क्या है कि इतना मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है कि पूरा लिक्विड बन जाता है. हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या, थोड़ा बहुत मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेगा, उसका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो सॉलिड ही रहेगा. इफ्लोरेसेंट मटेरियल मतलब क्या, ये मटेरियल मॉइस्चर एब्सॉर्ब नहीं करता, इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो रिलीज करेगा. कब रिलीज करेगा, व्हेन ए मटेरियल इज एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड कंडीशन. तो सम chemicals like caffeine, citric acid, ferrous sulfate, sodium carbonate, that will release the water of crystallization when exposed to humid condition, known as a efflorescent material. Efflorescent material. तो याद रखना ये तीनों, यहाँ पे efflorescent T होना चाहिए. Next is nothing but the, now to prevent this, there is a one so that's why this hygroscopic material or delicquescent material or efflorescent material, to prevent the this problem, they are stored in the desiccators.
दे आर स्टोर्ड इन द डेसिकेटर। आप देखो अगर कोई हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है तो उसको डेसिकेटर में रखते हो आप। सो डेसिकेटर में क्या होता है, डेसिकेंट होता है, डेसिकेंट। व्हाट इज डेसिकेंट? तो द एजेंट विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द हाइग्रोस्कोपिक ड्रग। आपने देखा होगा कैप्सूल का है जो बॉटल आता है, इफ यू गो एट अ मेडिकल स्टोर एंड इफ यू बाय ए कैप्सूल बॉटल, फॉर सिंपली एग्जांपल बिकाड एक्सामाइन कैप्सूल, in that you have the complex vitamins. So in that capsule you will find one pouch of silica gel का एक pouch होता है उसमें. Now that is a desiccant. Desiccant means what? The agent, the material which is used to protect the hygroscopic drug, and it acts by absorbing water from surrounding and preventing the hygroscopic drug to absorb the water. जैसे फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल जो जिलेटिन की कैप्सूल, उसमें क्या है कि एनवायरमेंट में अगर ह्यूमिडिटी है तो बार बार एक्सपोज अगर हो गया तो कैप्सूल में मॉइस्चर आ जाता है, वो कैप्सूल एक में को चिपक जाते हैं। टू प्रिवेंट दैट एक उसमें कैप्सूल के बॉटल में सिलिका जेल का पाउच डालते हैं, सिलिका जेल का पाउच, सो दैट जब आप ओपन करते हो बॉटल क्लोज करते हो उसमें जब एयर जाता है उसमें जो मॉइस्चर है वो सिलिका जेल एब्सॉर्ब कर लेगा और जिलेटिन का कैप्सूल इंटैक्ट रहेगा। तो डेसिकेंट्स आर द एजेंट व्हिच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द हाइग्रोस्कोपिक ड्रग. They act by absorbing the water from surrounding and prevent the hygroscopic drug to absorb the water. Example is silica gel. Silica gel. Now, European technical guides, European pharmacopoeial technical guide. European pharmacopoeia जो है European pharmacopoeia, EP, European pharmacopoeial technical guide. So they have classified hygroscopy बेस्ड अपॉन द स्टैटिक मेथड. तो आप है ना, आपने हाइग्रोस्कोपी तो मालूम हो गया. हाइग्रोस्कोपी इज द फिनोमेनन ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरनमेंट. हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल भी आपको समझ में आया, बट आप किसको बोलेंगे? इट इज हाइग्रोस्कोपी, वेरी हाइग्रोस्कोपी, इज है ना, इट इज अ नॉन हाइग्रोस्कोपी, इट इज अ वेरी हाइग्रोस्कोपी, इट इज डेली क्वेश्चन. कैसे आपको डिसाइड करना है? So that for that European technical guidelines are there. European pharmacopoeial technical guide classified the hygroscopicity of material based upon the static method. What you have to do? You have to take a material, say for example 1 gram. आपने कोई भी 1 gram ड्रग का पाउडर ले लिया, 1 gram पाउडर, and you have to subject that material for, है ना, you have to subject the material at a 24 degree Celsius temperature for 24 hours at a 80% relative humidity. तो ये कंडीशंस है कि 24 डिग्री सेल्सियस में 24 आवर्स में 80% relative humidity है ऐसे एनवायरनमेंट में, वो 1 ग्राम पाउडर जो आपने लिया है वो उसको रखना है. क्यों रखना है? कि आपने को ऑब्जर्व करना है, कि आपने को देखना है कि कितना मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है. ठीक है. सो based upon the static method, European pharmacopoeial technical guide classified hygroscopicity in 3 classes. Okay, so method समझ लो. So at a 24 degree Celsius, 24 hours, 80% relative humidity. Now आपने क्या किया है? आपने याद रखना है कि 1 gram of powder लिया है. 1 gram of powder you have kept at a 80% relative humidity at a 24 hours at a 24 degrees temperature. Now after that you have to withdraw that sample and you have to take the weight. है ना. आपने क्या किया कि as per the European pharmacopoeial technical guide आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लिया ड्रग का, जैसे मान लीजिए 1 ग्राम, जो भी वेट लिया आपने 1.1 1.2, तो वो आपने क्या किया कि 24 आवर्स 24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इस कंडीशन में रख दिया. नाउ दूसरे दिन क्या किया आपने? आके आफ्टर 24 आवर्स यू हैव टू विड्रॉ दैट सैंपल एंड यू हैव टू रीवे. आपने फिर से वेट करना है उसका. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक? आप कंपाउंड को स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक कब बोल सकते हो? नाउ विड्रॉ दैट कंपाउंड. नाउ इफ इंक्रीज इन द वेट ऑफ दैट कंपाउंड, है ना, आपको जो कंपाउंड है रखा था, इफ इंक्रीज इन द वेट ऑफ दैट कंपाउंड, इंक्रीज इन द वेट इज मोर देन 0.2% weight by weight, increase in the weight is more than 0.2% weight by weight, but less than 2%. Increase in the weight of compound is more than 0.2% but less than 2%. यहाँ पे 0.2 को बोल जाओ आप, यहाँ पे इतना रखो कि if increase in the weight of compound is less than 2%, 2% से ज़्यादा वेट बढ़ा नहीं है,
You can call that compound as a slightly hygroscopic. Okay, so a compound if increase in the weight is less than 2%, it is known as a slightly hygroscopic as per the European Pharmacopoeial Technical Guide. Now, what do you mean by hygroscopic? Now, if increase in the weight is more than 0.2% but less than 15%, मतलब क्या 2% से ज़्यादा है. If increase in the weight is more than 0.2% but less than 15%, मतलब ऊपर वाले से ज़्यादा ही है. So when increase in the weight of your compound is less than 15%, that is known as a hygroscopic. Hygroscopic as per the European Technical Guide. Hygroscopic. इसके ऊपर GPAT 20 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. तो स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक मीन्स व्हाट है ना, आपने क्या किया 1 ग्राम वेट करके कंपाउंड ले लिया पेटी डिश में, जैसे 1.1 ग्राम होगा उसका वेट, आपने उतना ले लिया और कंडीशन क्या रखा है कि 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 24 आवर्स के लिए रख दिया. 24 आवर्स के बाद में आप गए वापस, वहाँ से उठाया उसको, फिर से उसका वेट किया बैलेंस के ऊपर, है ना. तो अगर उसका वेट बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ना, लेस देन 2% वेट पर वेट, तो यू कैन कॉल दैट कंपाउंड एज अ स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक. अगर उसी कंपाउंड का वेट बड़ा है, कितना बड़ा है, लेस देन 15%, यू कैन कॉल दैट कंपाउंड एज अ हाइग्रोस्कोपिक. और उसी कंपाउंड का वेट अगर 25% बड़ा है, so if increase in the weight is more than 15%, more than or equal to 15%, more than 15% or equal to 15%, more than or equal to 15% known as a very hygroscopic. तो देखो है ना, स्टैटिक मेथड है, मेथड के बाद में इंक्रीज इन द वेट कैलकुलेट करना है. सो इंक्रीज इन द वेट इज लेस देन 2%, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक. if increase in the weight is again less than 15%, known as a hygroscopic. if increase in the weight is more than 15%, known as a very hygroscopic. and if it becomes liquid, तो deliquescent क्या होता है, so sufficient absorption of moisture, so absorption of sufficient water or moisture and become a solution, that is a deliquescent. इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था GPAT 20 में. Now here are different dryers. यहाँ पे dryers है, different dryers. Now, what is dryer? It is nothing but the equipment. It is nothing but the tool used to dry the material. There are different type of dryers. उसका क्लासिफिकेशन भी है, अपन देखेंगे, आएगा आपको आप बाद में. क्लासिफिकेशन देखें, पहले क्लासिफिकेशन देखें. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर, तो इसके ऊपर पहले एक बार मैं आपको बोल देता हूँ कौन सा ड्रायर कौन सा है. So you can say dryer is the instrument that is used to dry the product. So first one is it is an example of tray dryer. It is known as a tray dryer. तो पहला क्या है, tray dryer है. दूसरा है आपका drum dryer. The second one is a drum dryer. Third one is nothing but the fluidized bed dryer, BD. Fourth one is nothing but the spray dryer. Fourth one is nothing but the spray dryer. Okay. So first we will see the classification now. So classification of dryer, their advantages and disadvantages, very important है, very important. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. The types of dryer, their mechanism, examples, advantages and disadvantages. तो पहला है मेन क्लास static bed dryer. static bed dryer, static मतलब क्या, कांस्टेंट है, एक ही जगह पे हिल नहीं रहा. तो static bed dryer, तो कौन सा है static bed dryer, इसलिए ट्रे ड्रायर है, फ्रीज ड्रायर है ना. तो स्टैटिक बेड ड्रायर मैकेनिज्म क्या है ड्राइंग का, बल्क मोशन ऑफ एंटायर ड्राइंग मास, बल्क मोशन ऑफ एंटायर ड्राइंग मास. एग्जांपल ऑफ स्टैटिक बेड ड्रायर इज अ ट्रे ड्रायर एंड अ फ्रीज ड्रायर. इसके ऊपर क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2 times क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. स्टैटिक बेड ड्रायर एंड मूविंग बेड ड्रायर क्वेश्चन आता है उसकी. न्यूमेटिक ड्रायर कौन सा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. तो 2 times क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑलरेडी. ट्रे ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर एक ही जगह पे रहते हैं, घूमने वाला पार्ट कुछ नहीं उसमें, दैट्स व्हाई नोन एज स्टैटिक बेड ड्रायर, है ना. तो एडवांटेज क्या है, यहाँ पे एट्रिशन वगैरह ऑब्जर्व नहीं होता, यूजलेस है. एडवांटेजेस कोई काम का नहीं. डिसएडवांटेज है कि फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज एक्सपोज, डायरेक्टली एक्सपोज.
fraction of solid particle is directly exposed to the heat. Now second होता है moving bed dryer. Moving bed dryer, moving मतलब क्या, घूम रहा है या फिर हिल रहा है. That means it is not a static, it is a moving. So particles, इसका mechanism देखो, particles are in a moving and particles are separated from each other. एग्जाम्पल है उसका ड्रम ड्रायर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है रिसेंटली. इट इज अ ड्रम ड्रायर इज अ मूविंग बेड ड्रायर. इसके ऊपर भी एक दो बार क्वेश्चन आ रही. मूविंग बेड ड्रायर, मूविंग बेड ड्रायर, दैट इज अ ड्रम ड्रायर. तो entire mass is continuously exposed to heat source and hydration is possible. Disadvantage. नेक्स्ट है FBD, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. इसके ऊपर तो रिसेंटली क्वेश्चन आ चुका, लास्ट ईयर में भी आ चुका है. तो इन दिस particles remain suspended in an upward moving heated gas stream. इसमें क्या है कि particles remain suspended, particles are fluidized, particles remain suspended in the upward moving heated gas stream. Stream बोलते हैं उसको, stream. Now एग्जाम्पल इज FBD, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको FBD, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. FBD वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर इंडस्ट्री. FBD मतलब फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट. इसमें आप ड्राइंग भी कर सकते हो, इसमें आप मिक्सिंग भी कर सकते हो, इसमें आप ग्रैनुलेशन भी कर सकते हो, इसमें आप कोटिंग भी कर सकते हो. तो FBD is the multi-purpose dryer in which in the same instrument you are using for mixing, you are using for drying, you are using for granulation, you are using for micro encapsulation. That's why multi-purpose dryer है, fluidized bed dryer. अपन देखने के बाद में इसमें. Now in this case uniform drying is there. Because solid gas contact is excellent and attrition of particle takes place in a disadvantage. Next है pneumatic dryer. Pneumatic dryer. So drying is done by high velocity gas stream. Drying is done by high velocity gas stream mechanism. Example है उसका spray dryer. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. Example of pneumatic dryer और following one is a pneumatic dryer. So spray dryer is a pneumatic dryer. Again ये भी instrument important है industry के लिए. Spray dryer. So here efficient and rapid drying. And here we are not going to see construction and working. Construction working part GPAT के लिए उसमें से कुछ आता ही नहीं और वो यूजलेस है. यहाँ पे मेन क्या है कि क्लास, मैकेनिज्म, स्पेसिफिक एडवांटेज, स्पेसिफिक डिसएडवांटेज, वही लेंगे अपन. सो ये है ट्रे ड्रायर. इसको बोलते हैं अपन ट्रे ड्रायर. और ट्रे ड्रायर में क्या है, यू हैव, इट इज नोन एज स्टैटिक बेड ड्रायर. ट्रे ड्रायर है ना, स्टैटिक बेड ड्रायर एक ही जगह पर होता है. सो है ना, हॉट एयर इज सर्कुलेटेड अराउंड द ट्रेस. यहाँ पे क्या रहेंगे, ट्रेस रहेंगे, डिफरेंट ट्रेस. इन द इंडस्ट्री अराउंड 5 to 25 ट्रेस भी हो सकते हैं. एट लेबोरेटरी स्केल आपको 1 से लेके 5 ट्रे भी हो सकते हैं. और दिस ट्रे आर प्लेस्ड इन insulated casing, metal casing, in which there is a circulation of hot air. Hot air circulate किया जाता है यहाँ पे, and material to be dried is placed in the tray, you know, and then subjected to drying. It's simple as that. And again जो सर्कुलेशन होता है हॉट एयर का, उसको रिमूव भी किया जाता है, मतलब इनलेट यहाँ पे एग्जॉस्ट. तो ड्राइंग कैसे होता है, व्हेन हॉट एयर इज, है ना, hot air, when material is subject to, surface of material is subjected to hot air and their evaporation takes place. The moisture from material is evaporated, that is evaporated into air, that air is removed. So that's how drying is there. Construction working important नहीं. Now next is a drum dryer. ये है ड्रम ड्रायर, इसको बोलते हैं अपन मूविंग बेड ड्रायर. दिस वन इज स्टैटिक बेड ड्रायर, दिस वन इज अ मूविंग बेड ड्रायर. ड्रम ड्रायर इज मूविंग बेड ड्रायर. ड्रम ड्रायर में क्या है,
कि यहाँ पे आपका स्लरी और मटेरियल टू बी ड्राइड, इसमें पर्टिकुलरली स्लरी होता है. सो स्लरी इज केप्ट इन दिस pan. Now here is a drum. Here is a drum which is rotated horizontally in the feeding pan. Okay. Now inside the drum there is a circulation of hot air. Inside the drum there is circulation of hot air, heated drum. Yeah? Now what happens during the circulation? This liquid is picked by this drum as a thin film. यहाँ पे thin film आएगा, है ना. यहाँ तक आते आते ड्राई हो जाएगा. यहाँ पे ड्राई होने के बाद में यहाँ पे एक सुटेबल ब्लेड या स्क्रैपर होगा टू रिमूव द ड्राइड पार्ट. तो न्यूमेटिक ड्रायर. ठीक है. सो इट इज नोन एज अ मूविंग बेड ड्रायर. नाउ थर्ड वन इज नोन एज अ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. ये बीडी, ये जो है ये बीडी है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. ये बीडी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. इसके ऊपर एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है, एक बार मैंने वैसे बोला है GPAT 2022 में. What was the question? So the material is suspended with a high velocity airstream and there is a drying takes place between the hot air and material in the suspended form in following type of dryer, that is a FBD. वैसे होता है, देखो FBD में क्या है. So this one is known as a product container. यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट कंटेनर. आपको यहाँ से is your product container and from the below product container, यहाँ पे कंटेनर के नीचे क्या है, there is a screen, perforated screen. यहाँ पे हवा जाने के लिए रहता है, perforated screen. Now heated air is introduced from the bottom of the material. So what will happen? The heated air stream will go into material. Material will be suspended. Material यहाँ पे suspend होगा. The material will be suspended. That is known as a fluidized state. The material will be fluidized and there is a excellent contact between the hot air and initial particle of material, and that's why there is a quick drying. Okay. And to prevent the escape of material, these are the bag filters. और बाकी air जो है, so air will be removed from this. This is known as a fluidized bed dryer. Now spray dryer. So spray dryer is known as a pneumatic dryer. क्योंकि क्यों बोलते हैं pneumatic dryer? Because in this also the material to be dried, the material to be dried is a liquid, slurry or liquid, that is introduced to, है ना. इसमें क्या है, ये conical large conical container होता है, large conical container, and the material to be dried is sprayed. Material to be dried is sprayed as a droplet or as a mist, or as a droplet through this atomizer, spray atomizer. It is known as spray atomizer. Liquid is sprayed on the conical shaped casing, which is supplied with the hot air. इसमें hot air होता है अंदर. So the liquid to be dried, that is sprayed in the hot container, which is cylinder shaped, conical shaped. So again drying will occur in a few minutes, 2 to 3 minutes, and it is a continuous processing, because of the dried product, because of the gravity, it will get settled. यहाँ पे dried product settle आ जाएगा. So यहाँ से जैसे आप फीड करते रहोगे continuously, so it is a continuous process. ये क्या है, बैच है, बैच ना, एक इट इज अ बैच टाइप ऑफ ड्रायर. बैच क्यों बोलते हैं इसको, ये बैच है, ये कंटिन्यूस है, ये भी क्या है, कंटिन्यूस है, ये भी क्या है, कंटिन्यूस. ये क्या है, बैच. बैच और स्टैटिक. बैच क्यों, क्योंकि आप मान लीजिए आपने 5 kg आपका मटेरियल है एंड वो ड्राई करना है, तो एक बार वो 5 kg लोड कर दो, वो होने के बाद में दूसरा बैच का 5 kg. दैट्स व्हाई इट इज अ बैच टाइप ऑफ ड्रायर. बैच टाइप ऑफ ड्रायर है, ये भी क्या है, बैच टाइप ऑफ ड्रायर है. नाउ यहाँ पे कितना भी रख दो आप लिक्विड, है ना, तो इट इज अ कंटिन्यूस टाइप ऑफ ड्रायर. अगेन यहाँ पे भी आप लिक्विड भर दो बहुत सारा, तो दैट इज अ कंटिन्यूस टाइप ऑफ ड्रायर. So remember, spray dryer is a static also
batch type of tray dryer also. FBD is a static as well as batch type of dryer also. Then again there is a there is also this one. Drum dryer is a continuous type and moving bed dryer, continuous type, and this spray dryer is also continuous type and moving bed. ठीक है, बाद में आपको आता है एक this one is known as spray dryer. यहाँ पे you can see the liquid to be dried, that is sprayed as a mist or fine, and in this conical chamber there is a hot air. तो जैसे ये स्प्रे होता है, fine droplet will have excellent contact with the air and the product is dried immediately, है ना. And large है ना, आपको कब करना है स्प्रे ड्राइंग? when large amount of material is to be dried, and large amount of material is to be dried, and the properties of है ना material है ना बाकी ड्रायर से desired ना, you are not getting a desired product through other dryer. You need to dry a lot of sample, so then that case spray drying is used. अपन देखेंगे इसका advantage and disadvantage. Now variant of tray dryer, variant of tray dryer is known as a variant of tray dryer. जो tray dryer है आपका starting bed dryer है batch type का, तो variant of tray dryer is a tunnel tray dryer. tunnel tray dryer, तो tunnel tray dryer है ना, tunnel tray dryer is a variant of tray dryer. और drum dryer is known as a also known as drum dryer जो है उसको also known as a roller dryer, roller dryer or film drum dryer. So drum dryer is rotated at a drum is rotated at a speed of 1 to 10 rpm per minute in the liquid bath. Okay. Now variant of drum dryer is a vacuum drum dryer. Application of vacuum will increase the speed of drying. So variant of drum dryer is vacuum drum dryer. Now spray drying में क्या है, स्टेप वाइज प्रोसेस होता है. स्प्रे ड्राइंग इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप. तो स्प्रे ड्राइंग में देखो फर्स्ट स्टेप है एटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड, है ना. सेकंड स्टेप है ड्राइंग ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स. थर्ड स्टेप होता है रिकवरी एंड रिकवरी ऑफ ड्राइड प्रोडक्ट. एटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड मीन्स व्हाट? So whatever liquid to be you want to dry, that liquid is sprayed as a mist, as a droplets in the hot chamber, conical chamber. That is known as the atomization of liquid, and that liquid gets easily dried because a liquid droplet एक तो small होता है and it is uniformly surrounded by hot air, and that's why you are going to get drying time is very less. Within a fraction of second that droplet will dry, so drying time is very less. Then drying of liquid droplets, okay, and then recovery of dried part, ये step होते हैं ड्रायर. नाउ स्पेसिफिक एडवांटेजेस देखो यहाँ पे, स्पेसिफिक डिसएडवांटेज पूरा अगर पढ़ना है तो बुक में दिखाऊंगा मैं आपको. द स्प्रे डिस्क ऑटोमाइजर, जो स्प्रे करता है, द स्प्रे डिस्क ऑटोमाइजर इज अबाउट द 300 millimeter, 300 mm in a diameter and rotate at a speed of 3 to 50,000 rpm. The spray disc atomizer जो spray करता है, so that spray disc atomizer that is having 300 mm diameter उसका size है, and it will rotate at a 3 to 50,000 rpm. और इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. What is speed of, है ना, what is the speed of spray disc atomizer? The spray disc atomizer in case of spray dryer will rotate at a 3 to 50,000 rpm. Now at the bottom the spray dryer is connected with the cyclone separator. जो conical होता है that is cyclone separator. Now product obtained in the spray dryer, यहाँ पे याद रखना है, disadvantage important है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. What is the main drawback of spray dryer? The product obtained in the spray dryer, there is a thermolabile, hygroscopy and can undergo chemical decomposition. तो जो स्प्रे ड्रायर में जो प्रोडक्ट मिलता है आपको, दैट इज वेरी थर्मोलाबाइल, हाइग्रोस्कोपिक होता है. हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या है, तो वाटर में जल्दी एब्सॉर्ब कर लेगा, वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा. तो प्रोडक्ट आफ्टर द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द स्प्रे ड्रायर इज अ
थर्मोलेबाइल, हाइग्रोस्कोपिक एंड अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन, ये याद रखना आपको, क्वेश्चन आता है। स्प्रे ड्राइंग इज अ कंटिन्यूस ड्राइंग एंड जैसे मैंने बोला इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट इज अ मूविंग वेट ड्रायर। ड्राइंग इज वेरी रैपिड एंड ड्राइंग इज कंप्लीटेड विद इन 3 to 30 सेकंड ना, 3 to 30 सेकंड में ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। Thermal efficiency is low in case of spray dryer as much heat is lost in a discharge gas. Thermal efficiency कम है इसका। Thermal efficiency मतलब क्या, जो आपने हीटेड गैस दिया है और ड्राइंग के लिए जितना हीट यूज होना है और जितना वेस्ट जा रहा है, वेस्ट ज़्यादा जा रहा है। थर्मल एफिशिएंसी इज लेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल सी, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन सच वे दैट suitable for sterile product. When a spray dryer can be isolated, it can be used for sterile product. Sterile product पे use कर सकते हैं। Variant of spray dryer and its application. The same equipment can be used for spray dryer, can be used for spray drying and spray congealing. It is useful for encapsulation of solid and liquid particles. तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए स्प्रे ड्रायर यूज कर सकते हैं, या बीडी भी यूज करते हैं। तो यू कैन यूज फॉर एनकैप्सुलेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, इसमें इसके ऊपर जीपैट में भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ये बीडी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ये बीडी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। डिटेल में कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये आपको सेमेस्टर में होता है। देयर इज नो नीड ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, तो फ्लूइड मतलब क्या होता है, देयर आर टू स्टेट है ना, मतलब जो होता है जैसे सॉलिड इज अ वन फेज, लिक्विड इज अ वन फेज, गैस इज अ वन फेज। तो इफ देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड सॉलिड और गैसेस और लिक्विड, तो लिक्विड और गैसेस फेज दोनों एक साथ है तो उसको फ्लूइड बोल सकते हैं। या फिर सॉलिड एंड गैस एक साथ है तो उसको आप बोल सकते हो क्या कि फ्लूइड है। सो इन दिस, so there is a fluidized state because the material to be dried is suspended in the air steam or heated steam of air, so it is known as a fluid. So fluidized bed dryer। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये हॉट एयर और हॉट गैस इज पास्ड है ना इन द प्रोसेस थ्रू अ परफोरेटेड बॉटम कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स और प्रोडक्ट टू बी ड्राइड। जो भी मटेरियल ड्राई करना है, जो भी ग्रैन्यूल्स ड्राई करना है आपको, दे आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर एंड एट द बॉटम ऑफ कंटेनर देयर इज अ परफोरेशंस एंड हॉट एयर और गैस इज पास्ड थ्रू द बॉटम ऑफ दैट परफोरेटेड container, right? Now, so material will be suspended for a time being in a year. So residence time for drying is a 40 minutes. 40 मिनट में आपका ड्राइंग कंप्लीट होगी। Residence time for drying is a 40 minutes. Again, it is popularly used for drying of granules in the production of tablet. ये भी याद रखना है। So it is used in a tablet production of tablet for granulation, drying, and mixing, for also for the encapsulation. ABD can be used for 3 operations. Fluidized bed dryer can be used for 3 operations. जैसे for example mixing है, granulation है, and drying. Mixing, granulation, and drying that can be done in the one instrument, ABD. It is also modified for the coating of granules. So coating भी इससे कर सकते हैं, मैंने बोला है। Advantage of this ABD, so drying time drying in a 20 to 40 minutes, short handling time होता है, wide range of capacity इसका बहुत ज़्यादा होता है, 52 to 200 kg, मतलब depending on the size, so the capacity ranging from 52 kg to 200 kg per hour, मतलब you can dry the 200 kg material in a 40 minutes. Then thermal efficiency is a 2 to 6 time better than tray dryer, इसमें thermal efficiency ज़्यादा है। And hotspot are not observed
in the drying because it is an excellent mixing and drying kit. देखो स्प्रे ड्रायर में क्या होता है कि डायरेक्टली स्मॉल पार्टिकल ऑफ मटेरियल इज एक्सपोज टू ए हॉट एयर, दैट्स व्हाई ड्राइंग स्पॉट, जैसे आपका स्प्रे ड्रायर में भी होता है ड्राइंग स्पॉट ऑब्जर्व होता है, बट इन केस ऑफ एफबीडी ड्राइंग स्पॉट इज नॉट ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ द थर्मल एफिशिएंसी इज वेरी हाई एंड एक्सलेंट मिक्सिंग इज देयर. यहाँ पे ये एफबीडी का एडवांटेज हो रहा है. नाउ प्लग फ्लो ड्रायर इज अ वेरिएंट ऑफ एफबीडी. प्लग फ्लो ड्रायर is the variant of fluidized bed dryer. Only disadvantage of this dryer is nothing but the in many organic powder, many organic compounds or many organic material develop electrostatic charge during drying. एफबीडी में क्या है, कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप होता है मटेरियल में. दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज. अदरवाइज दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्रायर फॉर ड्राइंग, मिक्सिंग as well as granulation as well as coating. You can see this is the diagram for FBD, schematic diagram for fluidized bed dryer. जो भी मटेरियल है आपका, so whatever material is there, so that material is here. This is material and material is there, and from the bottom of this there is a hot air is passed. So this air will take a material along with it, will suspend in the, यहाँ पे suspend हो जाएगा. This is known as a fluidized state. And because of the contact of that hot air with the particles or granules, they will be dried and air will be removed from this point. And to prevent the fines, there is a filter valve. Baki important. Now freeze drying is there. So freeze drying, but abhi kya hai 5% हो गया. So next drying is a freeze drying. Very important. Freeze drying or also known as a lyophilization. Freeze drying or freeze dryer is known as a lyophilization. Freeze drying is known as a lyophilization and freeze dryer is known as a lyophilizer. इसको lyophilizer बोलते हैं. So freeze drying और lyophilization, इसके ही ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. Lyophilization और freeze drying. Lyophilization मतलब क्या है ना? To make a solvent loving by the drying. That is a lyophilization. Lyo मतलब क्या है? Solvent. Lyo मतलब loving. So to make a solvent loving by removing the solvent. So freeze drying or lyophilization is the system. In this system, it makes the solvent loving by removing the solvent. Freeze dryer. Okay. Now drying is done by subjecting a material below its triple point. It's not below the triple point of water. Drying is done by subjecting the material below the triple point of water. Triple point of water क्या होता है? So it is nothing but the temperature is 0.98 degrees Celsius and pressure is a 4.5 mm of Hg. तो मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पे ये कर दूंगा. यहाँ पे सॉलिड है. सॉलिड मतलब क्या? आइस, वाटर आइस. सॉलिड फेज मतलब वाटर का आइस है. यहाँ पे लिक्विड फेज है मतलब वाटर का लिक्विड है. यहाँ पे क्या है? वेपर्स है. ओके. सो द पॉइंट एट विच वाटर एग्जिस्ट इन अ 3 फेज एट अ इक्विलिब्रियम. मतलब एक टेम्परेचर प्रेशर होता है. यहाँ पे ना प्रेशर है, वाई एक्सिस प्रेशर, एक्स एक्सिस टेम्परेचर. द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच water exists in a 3 phases at an equilibrium known as a triple point of water. Triple point of water कितना है? प्रेशर होता है 4.5 mm of Hg, टेम्परेचर होता है 0.98 डिग्री सेल्सियस, है ना. तो एट दिस टेम्परेचर, है ना, नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके पास बर्फ है तो बर्फ को अगर आप हीट करेंगे, सपोज यू हैव आइस, इफ यू हीट द आइस इट विल बिकम अ लिक्विड.
if you heat the liquid it will become a vapor. इससे लिक्विड सर सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर बन जाएगा, है ना? yes or no? yes. But now triple point of water, at this point you can convert solid into directly vapor. At a triple point you can convert solid into directly vapor. मतलब क्या, जो आइस है आइस को डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर vapors can be condensed back, vapors can be condensed back into solid. So conversion of solid to vapor is known as a evaporation. Conversion of vapors to the solid is known as a condensation. Conversion of solid to the liquid is known as liquefaction, and conversion of liquid to the vapor is known as a vaporization. So in case of spray, in case of your freeze drying or lyophilization, so drying of material is done by subjecting the material below the triple point of water. In triple point of water, ठीक है, उसमें स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप है प्रिपरेशन एंड ट्रीटमेंट. पहला स्टेप होता है फ्रीज ड्राइंग. फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन एंड ट्रीटमेंट. इट इज एसेंस, इट इज समरी. ये पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये सब नहीं ले रहा मैं, है ना. यहाँ पे क्या है ना, इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट. पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है. प्री ट्रीटमेंट मतलब क्या, अगर आपके मटेरियल में ज़्यादा मॉइस्चर है तो यू हैव टू रिमूव मॉइस्चर एज मच एज यू कैन. तो प्री ट्रीटमेंट मतलब क्या, so pre-treatment मतलब removal of moisture as much as you can. So pre-concentration of product under the vacuum tray drying or use of liquid or solid dissipant. पहले जितना moisture निकाल सकते हो निकाल लो. बाद में क्या, pre-freezing to solidify the water present in the material. मान लीजिए आपको टाल्क का फ्रीज ड्राइंग करना है. टाल्क का है फ्रीज ड्राइंग. तो टाल्क को पहले ट्रे ड्रायर में ड्राई करो सॉलिड डिसिपेंट यूज करके वगैरह. बाद में क्या करो, वो टाल्क को इतना फ्रीज करना है, मतलब यू हैव टू स्टोर दैट टाल्क बिलो 0 डिग्री. यू हैव टू स्टोर दैट टाल्क इन अ -50 डिग्री सेल्सियस इन फ्रोजन सेल. तो क्या होगा, वट एवर वाटर इज प्रेजेंट इन द टाल्क, water molecules, they will get freeze. There is a conversion of water molecule into ice by subjecting the material to -50 degree Celsius. यहाँ पे आइस बन गया है वाटर का. That is the pre-treatment. That is a preparation and pre-treatment. Then अभी जो वाटर है आपका वो आपको रिमूव करना है. So that ice है ना, so जो भी मटेरियल में वाटर था मॉइस्चर उसको अपने सॉलिड बनाया by subjecting the material into -50 degree Celsius. अभी जो वो आइस बनाया है मटेरियल के अंदर, वो आइस को आपको वेपोराइज करना है ना. तो नोन एज अ प्राइमरी ड्राइंग. सेकंड स्टेप, दिस इज अ sublimation of ice under vacuum. Okay, now temperature and pressure is kept below the triple point of water. Triple point of water क्या है, that is 0.0098 degree Celsius temperature and 4.58 mm of Ag pressure. तो जो आपका टेम्परेचर है 0.0098 डिग्री सेल्सियस, वो टेम्परेचर के ऊपर एंड प्रेशर के ऊपर आपको आना है. सो दैट जो वट एवर आइस इज प्रेजेंट इन द मटेरियल दैट विल डायरेक्टली वेपराइज sublime into vapor for sublimation. When temperature and pressure at which the frozen, what is that? Temperature and pressure at which frozen solid vaporizes without conversion into liquid, it is known as a eutectic point. It is known as a eutectic point. So material is subjected to below triple point of water and then secondary drying होता है. सेकेंडरी ड्राइंग मतलब क्या, जो भी रेसिडुअल वाटर मॉइस्चर बचा है वो रिमूव करना. सेकेंडरी ड्राइंग इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ रेसिडुअल मॉइस्चर बाय अप्लाइंग द हाई वैक्यूम. इसमें हाई वैक्यूम अप्लाई करना है. टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड अप टू 50 to 60 डिग्री. वैक्यूम इज लोअर्ड बिलो द प्राइमरी ड्राइंग में, है ना. तो ये सेकेंडरी रेसिडुअल रिमूवल ऑफ वाटर. नाउ मतलब क्या, फ्रीज ड्राइंग, यहाँ पे देखो फ्रीज ड्राइंग इज आल्सो नोन एज लायोफिलाइजेशन. फ्रीज ड्रायर इज आल्सो नोन एज लायोफिलाइजर. सो इन दिस फ्रीज ड्राइंग the removal of moisture or removal of water is taking place. Removal of moisture or removal of water by subjecting the material below the triple point of water. इसमें 3 स्टेप होते हैं, प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट.
जिसमें आपको मटेरियल को फ्रीज करना है. पहले तो रिमूव करना है मॉइस्चर. तो रिमूव एज मच एज यू कैन रिमूव बाय यूजिंग ट्रे ड्रायर और डेसिकेंट, देन प्री फ्रीजिंग to solidify the water present in the material by subjecting into -50 degrees Celsius cold shelves. Then primary drying. So subject that material below the triple point of water, that is 0.0098 degrees Celsius temperature, 4.58 mm of pressure. Now at this point, so whatever ice is there, that will directly vaporize, that will directly sublime, will be converted into vapors. That will be removed. Okay. So secondary drying में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के वैक्यूम अप्लाई करना है, so that if any something removed remaining is there, that will also be removed. That is known as a freeze drying. Right. So you can see यहाँ पे देखो है ना. So if you plot a pressure and temperature on x axis and pressure on y axis, and this one is the water. वाटर है, देखो यहाँ पे. So three phases are there. So this orange is known as a solid, this blue is known as liquid, and this green is known as a gas. This green is known as gaseous phase. मतलब यहाँ पे क्या है, ये solid मतलब ice है, liquid मतलब liquid water है, and ये क्या है, water vapors, है ना. Now the temperature and pressure. Now focus on this point. ये जो point है, the temperature at this point is 0.0098 degrees Celsius and pressure is a 4.58 mm of Hg or torr. Now ये है ना, यहाँ पे ice है आपका, ice, यहाँ पे water है, यहाँ पे water vapors है. Now so conversion of solid to liquid known as a melting, and conversion of liquid to solid known as a freezing. Conversion of liquid to vapor known as a vaporization, and conversion of vapor to the liquid known as a condensation. Now conversion of solid to the gas is known as sublimation, and conversion of gas to the solid known as deposition. So at a triple point of water, ये जो triple point है, triple point of water. Now at this point, at this temperature pressure condition, you can convert solid into liquid. You can convert solid into liquid, solid into gas, gas into solid, gas into liquid. तो गैस है ना, मतलब यहाँ पे एक टेम्परेचर प्रेशर होता है कि इससे कोई भी फेज में जा सकते हो. That is known as triple point of water. Now freeze drying is nothing but the same. So drying is done by subjecting a material below its triple point, below the triple point of water. Now है ना, तो कुछ फ्रीज ड्रायर का कुछ ऐसा होता है, ड्राइंग चेम्बर, refrigeration system to achieve a desired temperature and pressure condition. So you can see diagram in the books also. Okay. Now you can see over here again all the dryers will see the comparatively. पूरे ड्रायर्स फिर से एक बार comparatively देखो. तो dryers comparatively, types of dryer, their short description, advantage and disadvantage. ये मैंने अपडेट किया है, बुक में भी अपडेट है. तो ट्रे ड्रायर in this hot air is constantly circulated. ट्रे रहेंगे, ट्रे में प्रोडक्ट आपको रखना है टू बी ड्राइड, प्रोडक्ट टू बी ड्राइड प्लेस्ड इन द ट्रे, एंड देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ हॉट एयर कॉन्स्टेंटली, है ना, और बाय द फोर्स कन्वेक्शन, वहाँ पे फैंस हो रहे हैं, टू रिमूव द लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड इन द ट्रे, नाउ एडवांटेज क्या है इसका? ट्रे ड्रायर इज अ स्टैटिक बेड ड्रायर एंड आल्सो बैच टाइप, बैच वाइज ऑपरेशंस of material, batch wise operations, material handled as a single or separate entity, used for the variety of material. है ना. डिसएडवांटेजेस एंड यूजेस क्या है इसके? डिसएडवांटेज एक होता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर्स मोर लेबर. नाउ यूज्ड फॉर स्टिकी, है ना, यूज्ड फॉर स्टिकी
plastic, crystalline or precipitate and paste material. Material like sticky material, plastic material, crystalline material, precipitates and paste, they are dried by tray dryer. Variant of tray dryer is known as a tunnel tray dryer. That is my variant of tray dryer is a tunnel tray dryer. वैक्यूम ट्रे ड्रायर भी होता है, वैक्यूम ट्रे ड्रायर भी होता है. नाउ नेक्स्ट इज अ ड्रम ड्रायर. ड्रम ड्रायर क्या है? मूविंग बेड ड्रायर. पहला क्या है? ट्रे ड्रायर स्टैटिक. ड्रम ड्रायर उसका वेरिएंट होता है वैक्यूम ड्रम ड्रायर. इन दिस metal drum rotates. In this metal drum rotates at a speed of 1 to 10 rpm. मेटल ड्रम रोटेट्स एट द स्पीड ऑफ 1 to 10 rpm. इसका स्पीड एक बार पूछा है लॉन्गिट्यूडनली, पार्शियली डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन टू बी ड्राइड. जो सॉल्यूशन ड्राई करना है उसमें ये ड्रम डीप होता है, तो जैसे ही घूमता है इट विल टेक अ वन लेयर ऑफ लिक्विड which will be dried during the one circle, and dried product will be scraped out. Drying time is very less. तो ड्राइंग टाइम कितना है? 6 to 15 सेकंड. 6 to 15 सेकंड में आपका ये पूरा ड्राइंग हो. कॉम्पैक्ट, हाई रेट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर इज देयर. इसमें डिसएडवांटेज होता है मेंटेनेंस कॉस्ट इज हायर. इसमें मूविंग आइटम है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हायर than tray dryer. Skilled operators are required, not suitable for solution of salt and heavily soluble. यूज क्या है उसका? to dry the solutions, slurries, suspensions like starch, ferrous salts, zinc oxide, suspension of kaolin, antibiotics and DDT. ये ड्राई करते हैं ड्रम ड्रायर्स. स्प्रे ड्रायर. so in the spray dryer, so liquid to be dried, that is atomized, so fluid droplets and then dried readily in the stream of hot gas. Now it is a continuous process, है ना. ड्रम ड्रायर इज ऑल्सो, ड्रम ड्रायर ये दोनों भी क्या है? कंटिन्यूसली. ड्रम ड्रायर एज वेल एज स्प्रे ड्रायर, दैट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ड्राइंग इज कंप्लीटेड विद इन 3 to 30 सेकंड, है ना. बहुत ही कम ड्राइंग टाइम. लो लेबर कॉस्ट एंड कैन बी यूज्ड फॉर स्टराइल प्रोडक्ट. highly water soluble product is opted for the hygroscopic product. So ये क्या रहता है? It is a bulky and expensive. Bulky and expensive. Thermal efficiency is low. Used for when large quantity of material is to be dried. Used for inorganic plant material, antibiotics, vaccines and biologicals product. ना उसके बाद में नेक्स्ट है वो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. ये बड़ी जैसे मैंने बोला जीपैट 23 में क्वेश्चन आ चुका है. तो वेरिएंट ऑफ ABD is a plug flow dryer. The products are lifted from bottom and suspended in a air stream, that is a fluid state. तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था GPAT 20. Here high thermal efficiency is there, large capacity is there. Drying is done in 20 to 40 minutes, and it can be used for batch as well as continuous type of dryer. No hotspot and mixing efficiency is high. है ना. यहाँ पे डिसऑर्डरेज क्या है उसका? एक ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलपमेंट एंड एडिशन इज पॉसिबल. यूज्ड फॉर द ग्रैनुलेशन, मिक्सिंग, ड्राइंग. ग्रैनुलेशन 3 प्रोसेस कैन बी मॉडिफाइड फॉर कोटिंग आल्सो. नाउ नेक्स्ट होता है वैक्यूम ड्रायर. यहाँ पे यूज ऑफ वैक्यूम यूज करेंगे तो क्या होता है? व्हेन यू अप्लाई वैक्यूम, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल डिक्रीज. जब आप वैक्यूम अप्लाई करते हो, इट विल लोअर वैक्यूम टू लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना. सो ना जैसे नॉर्मली बॉइल करता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर वैक्यूम अप्लाई किया तो 80-60 इसके ऊपर ही बॉइल करेगा. इजी टू हैंडल एंड प्रोवाइड अ लार्ज सर्फेस एरिया फॉर हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज लो. इसका कैपेसिटी लिमिटेड है. रिस्क ऑफ ओवरहीटिंग ऑफ प्रोडक्ट. यूज फॉर थर्मोलबाइल मटेरियल विच इज डिकम्पोजिंग, डस्टी एंड हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल. लास्ट में होता है फ्रीज ड्राइंग. मटेरियल इज subjected to below the triple point of water, sublimation of water from frozen state. और इसका यूज फॉर थर्मोलबाइल मटेरियल
material can be dried in a single dose or multiple dose while stability can be maintained. Product prone to the oxidation, that is a disadvantage. Product is prone to the oxidation. Equipment is costly, drying time is high, up to 10 hours, plus time, and it is used for steroids, antibiotics, vitamins, enzymes, blood and plasma product, blood fractions, plasma product, बैक्टीरिया एंड वायरल वैक्सीन. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. तो क्वेश्चन आता है ऐसा कि ब्लड प्लाज्मा फ्रैक्शंस, bacterial and viral vaccine culture that can be dried by which type of dryer? It is dried by freeze dryer or lyophilization. तो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. तो दैट विल एंड योर ड्राइंग चैप्टर. और इसमें अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछो, है ना. एक बार आप बुक में से पढ़ लो. तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको. दिस इज अ बुक known as a pharmaceutical engineering by CVS Subramanian. ये बुक है CVS Subramanian का. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर, यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखो. स्टैटिक बेड ड्रायर, मूविंग बेड ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, न्यूमेरिक ड्रायर, तुमने देखा है. ट्रे ड्रायर जैसे प्रिंसिपल है. उसके बाद में कंस्ट्रक्शन वर्किंग, बाद में क्या है यूजेस एंड डिसएडवांटेज, अपने ये पूरा देखा है. ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, उसका स्टेप्स होता है वो भी देखा है अपन ने. मैकेनिज्म, एडवांटेज डिसएडवांटेज, बस जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने लिया है ऑलरेडी. डोंट वरी, ये पीडी भी सब कुछ देखा है अपन. इफ यू वांट टू रीड, you can read from this book in detail, or any other pharmaceutical engineering book in detail. Tomorrow we'll see the next chapter known as evaporation. Right? So I will end this session. I hope समझ में आया सबको. Are you getting or not?